So hello guys, welcome back in our YouTube channel MedicoX. And first of all, thanks for clicking on this video. So you are also wondering for the second year MBBS books. You are also confused? Then you are in a good place. यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट्स को लेकर के उसके डिफरेंट ऑथर्स जिनका बुक यहाँ पे प्रेजेंट है उनके बीच में जो माइन्यूट डिफरेंस है उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. Yes, I am Dev Kumar Sahu, a MBBS student who is waiting for the result of second year MBBS. So yes, you can say that I am a third year MBBS student. Following our masterpiece quote that every 5 minutes matters, let the video begins. So वीडियो को शुरू करने से पहले I will like to enumerate all the different subjects that we have in second year MBBS. So when I was in the second year MBBS, like in previous year, we had 4 major subjects. But you guys are having only 3 subjects. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पढ़ाई के लिए बर्डन कम है. You have less time and less subject. If government has deducted the number of subjects, they have also deducted the duration of second year MBBS. You do not have any honeymoon period. Okay, so where we were? We were discussing the 4 major subjects. First, pathology. Second, pharmacology. Third, microbiology. And the last but not least, forensic medicine and toxicology. The fourth subject, which is FMT, it is moved to the third year in your curriculum, but the study of forensic medicine and toxicology starts from the second year itself. So we will be discussing about all the 4 major subjects. Here I am going to categorize all the different books into 4 categories. The first, Golden Standard book, which is also known as International Standard book. Second, Indian Standard book. Third, exam preparatory manuals. And fourth, review book of the particular subjects. So without wasting any time, let the video begins with the pathology. So here we have Robbins. This is the first volume of Robbins and Cotran. मतलब आप ये कह सकते हैं कि now I have gold in my hands. So what is the concept behind this pathology or any gold standard books? आप एक बहुत बड़ा एरिया माइन करते हैं, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड मिलता है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैथोलॉजी और दिस रॉबिन्स. आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और आपको वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे. यू हैव टू हाईलाइट देम बिकॉज आप बार बार रिवाइज कर सकोगे हाईलाइट करने के बाद, और यू कैन मेक योर ओन नोट्स. सो वी हैव 2 वॉल्यूम्स ऑफ दिस रॉबिन्स. दीज आर द बोथ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम नंबर 1 and volume number 2. Okay, so now we are moving to the Indian Standard book, the book which is written by Dr. Harsh Mohan. This is the Harsh Mohan book. So this is the pathology book of Harsh Mohan. Actually ये जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है. Actually it is covered with the cardboard and I have converted the Harsh Mohan, a bulky Harsh Mohan, into 2 volumes. And while studying, you study about definition, clinical features, risk factors, epidemiology and the morphologic features, जिसमें gross features और microscopic features दोनों आते हैं. Gross features means what it looks like from the outside, and microscopic features means at the cellular level what are the different changes that is causing the pathology or that is causing occurrence of disease. So all these content that I discussed, the like definition, risk factor, epidemiology, all these things, all the contents of a topic, वो सारी की सारी चीज़ें पैथोलॉजी में एक टॉपिक के अंदर में एक जगह पे दी गई होती हैं. सो इसके बाद हम अब मूव करते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी की ओर, विच इज़ एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल. सो द पैथोलॉजी बुक विच इज़ एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल दैट वी हैव इज डॉक्टर रामदास नायक. Actually this book is the derivation of Robbins and Harsh Mohan. Some important points has been taken from the Robbins and the diagram has been taken from the Harsh Mohan. Actually I do not have the Dr. Ramdas Nayak book, but I studied from the PDF and on the basis of my experience I am saying that it is the derivation of Robbins and Harsh Mohan. Now moving to our fourth category, which is review book. So here we have the review book of pathology which is written by Dr. Spas Gupta and Dr. Govind Rai Garg. What are the different features that we have in this book? We have point wise explanation, we have key points and we have MCQ. After completing all the concepts from different books, you can use this book for revision and you can use this book for solving MCQs. Now we are going to discuss about the conclusion. Standard books like Robbins and Harsh Mohan, you should follow one of them, then you can go to a revision book. The difference between Robbins and Harsh Mohan is histopathology. The pictures of histopathology which is given in Robbins is very complex. On the other hand, in Harsh Mohan, it is given in a manner that you can write or you can draw in the university exams or your state examinations also. So if you have time, then I would suggest you to study the Robbins because the concepts are awesome. Then you can follow the diagrams, the histopathological diagrams from the Harsh Mohan.
If you are going with the Hers Mohan, then it is also okay because Hers Mohan is also a very good book. So अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकेंड मेजर सब्जेक्ट की ओर, जो कि है फार्मेकोलॉजी. सो देयर आर ओनली 2 ऑथर्स जिनके बुक यहाँ पे इंडिया में चलेंगे. फर्स्ट द केडी त्रिपाठी एंड सेकेंड सानबाग. द केडी त्रिपाठी इज गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एंड ऑल्सो एन इंडियन स्टैंडर्ड बुक. This is the essential of medical pharmacology, which is written by Dr. K.D. Tripathi. This book is Indian standard book as well as golden standard book. It has lots of knowledge, lots of concepts. आपको फार्माकोलॉजी से प्यार हो जाएगा इस बुक को पढ़ करके. The second book about which I was talking, this is Sanbag. It is actually an exam preparatory manual. So you can use this book while preparing for the examinations when you do not have the enough time to revise. Then you can follow the Sanbag. So now discussing what are the difference between these two books, K.D. Tripathi and Sanbag. तो difference को समझने से पहले you will have to understand what we learn in the pharmacology. In the pharmacology we study the interaction between drugs and the body, between the drugs and the human body actually. So basically we study about a drug. So एक drug human body में जिस तरीके से काम करता है उसे हम यहाँ पे कहते हैं mechanism of action. So a drug may have a lots of number of mechanism of actions. So Sanbag केवल उसके मेजर फंक्शन को और मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करता है, बट केडी त्रिपाठी एक ड्रग्स और उसके जितने भी पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, जितने भी पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है. आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट वीडियो ऑन द फार्माकोलॉजी ऑफ दिस केडी त्रिपाठी. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. लेटर ऑन यू कैन चेक इट. Now, what is my opinion for pharmacology? You must be knowing that I will suggest you to study the K.D. Tripathi. I accept that it is a bulky book. It will take times to understand. It will take times to study. But gradually you will study and you will fall in love with the pharmacology. You can also have Sanbag for the exam preparation. अब हम बात करेंगे थर्ड मेजर सब्जेक्ट्स का, जो कि है माइक्रोबायोलॉजी. सो माइक्रोबायोलॉजी के लिए we have only 2 authors. The first Apurva Shastri and second Ananta Narayan. So both are the standard books. This is the essential of medical microbiology, which is written by the Dr. Apurva Shastri. I have second edition and now you can get the third edition. This is the textbook of medical microbiology, which is written by Dr. Ananta Narayan and Panikars. ये दोनों ही बुक्स आपस में बहुत अच्छी हैं और एक्चुअली ये गोल्ड स्टैंडर्ड में भी आ जाती हैं, इंडियन स्टैंडर्ड में भी आ जाती हैं, एग्जाम प्रिपरेटरी में भी आ जाती हैं. देन यू विल बी थिंकिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस अपूर्वा शास्त्री एंड डॉक्टर अनंत नारायण बुक्स. दैट इन द थर्ड एडिशन अपूर्वा शास्त्री बुक इंक्लूड्स बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी एज वेल एज पैरासाइटोलॉजी. On the other hand, in Ananta Narayan books, there are no parasitology. For parasitology, you will have to get another author's book. Discussing the different books for parasitology. पैरासाइटोलॉजी के कुछ ऑथर्स जैसे अपूर्वा शास्त्री, सेकंड बावेजा, थर्ड पानिकर्स की बुक. हियर आई हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ पानिकर्स फॉर मेडिकल पैरासाइटोलॉजी. इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड बुक. If you are going with the microbiology written by Dr. Apurva Shastri, then you do not need to purchase any separate books for parasitology. अब हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी. सो फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी की 2 बुक आती है. पहला है डॉक्टर K.S. नारायण रेड्डी की बुक और दूसरा है बडाले सर की बुक. This is the 34th edition of the Essentials of Forensic Medicine and Toxicology, which is written by the Dr. K.S. Narayan Reddy. So actually this is a gold standard book and an Indian standard book for the Indian medical students. And this is the textbook of Forensic Medicine and Toxicology, which is written by the Dr. Badale. Again with the same question, which are best and what are the different features of these books. So K.D. Tripathi books has a paragraph wise explanation. On the other hand, we have बडाले सर बुक्स जिसमें पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं. नारायण रेड्डी सर जिनका लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. डॉक्टर बडाले सर हैज़ यूज वेरी इजी लैंग्वेज, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स विच आर गिवन एडिशनली टू दिस K.S. नारायण रेड्डी सर बुक्स. So this is the gold standard book, whereas this is not a gold standard book. This can be categorized into Indian standard books, whereas the K.S. Narayan Reddy sir books can be categorized into gold standard book as well as Indian standard books. Another difference in these books are the diagrams. K.S. Narayan Reddy sir की बुक जिनमें ब्लैक एंड वाइट डायग्राम दिए गए हैं,
या तो कहीं पे रेड कलर का यूज़ किया गया है, कुछ बीच में सीट्स ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे बहुत सारे कलर फ़ोटो एक साथ में दिए गए हैं। बट डॉक्टर बरडाले सर की बुक, जहाँ पर हमें कलर फोटोग्राफ हर एक पेज पे हर एक टॉपिक के अंदर में दिए गए हैं। अब बात करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के बाद टॉक्सिकोलॉजी की। सो टॉक्सिकोलॉजी के लिए आई वुड सजेस्ट टू रीड द डॉक्टर बरडाले सर बुक्स, बिकॉज इसमें जिस तरीके से पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पॉइंट वाइज क्लासिफिकेशन दिए गए हैं टॉक्सिकोलॉजी के, विच इज़ वेरी बेस्ट। अगेन विद द सिमिलर क्वेश्चन, व्हाट इज़ माई ओपिनियन विद द टू बुक्स? यू कैन गेट बोथ ऑफ देम, बट आई वुड सजेस्ट टू परचेस Dr. K.S. Narayan Reddy sir books and get the Dr. Berdale sir books from your seniors. Like me, I got this book from one of my favorite senior. So finally, we have completed the discussion regarding books. If it took much times, then I am sorry. लेकिन मैं promise करता हूँ I will always take your times and attention like this. Share this video with everyone that you know who is studying in second year MBBS. Share this video to the first year MBBS students too, because the pending first year MBBS books review is on the way. I will love to know what you think about today's discussion. If you have any suggestion, please comment it down on the comment box. Spread love and support everywhere. Thank you, your Medico X.